Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning, student of class 9. How are you? I hope you all are fine. Now, new session 8 of circle, exercise 10.5, question number 2. In previous video, we discussed question number 1 of exercise 10.5. Now, we discuss about question number 2. What is the question number 2? A chord of a circle is equal to the radius of a circle. Yes, it is given. This is a circle and this one is a chord. And it is equal to the radius of a circle. This is equal to, therefore, solution is OA, OB and AB. All three are equal. Find the angle subtended by the chord at a minor arc. Minor arc पे point है, that is D. What is this is angle? Angle how? What is the angle ADC? What is the value of angle ADC? And एक major arc पे point है. And then what is the value of angle P? Now, come on the, we know that OA, OB, AB तीनों equal है. So, triangle AOB is the तीनों side equal होगी. That is equilateral triangle. Is it clear? When it is equilateral triangle, the whole angle of a triangle is 60. So angle O is 60. अगर ये 60 का है तो बेटे क्या बन रहा? That is in its center and this is at circumference. So angle at center is double of its circumference angle. हमने थ्योरम की है. So angle AOB is double of angle P. What is the AOB value? This that is 60. Double of angle P. दो को डिवाइड में लीजिए 60/2. That is 30. So angle P is 30. Is it clear? Therefore, APB is 30. This is our first answer. Now we find out angle AD. We know that it is the cyclic quadrilateral. ABBD is cyclic quadrilateral, and the opposite angle sum of cyclic quadrilateral is 180. So angle P plus D. What is the value of P and D? Sum of P plus D is equal to 180. हमने थ्योरम की हुई है. What is the value of P? That is 30. Now we find out D. That is 180 equal to प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा. So the angle D is equal to 150. So ADB, the value of ADB is equal to 150. Is it clear, my dear? This is our answer. Now, in the next third question for your homework. Now come on the fourth question and for your homework. Now come on the fourth question. What is our fourth question? Yes. Next question, in a figure, where figure is given, this one, BC, this is ABC and BDC. This angle ABC, this is 69, it is also given, and ACB, only this, that is 31. Now we find the BDC, हमें BDC find करना है. देखिए बेटे, come on the solution. आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ABC. We know that the angle sum property of triangle, angle A plus B plus 1 is equal to 180. Angle sum property of triangle. Now we know that what is the value of A. We find out A is 69, 1 is 31, is equal to 180. 100 is equal to 180. प्लस कब जाएगा? दैट इज माइनस 180 माइनस 100. तो एंगल ए इज इक्वल टू 80. सो एंगल ए वैल्यूज इज 80. नाउ वी फाइंड द एंगल डी. हाउ वी फाइंड द एंगल डी? वी नो दैट एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. सो एंगल डी और ए आपस में इक्वल होंगे कि ए की तरफ के जितने एंगल होते हैं सेगमेंट में वो आपस में इक्वल होते हैं. सो एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, एंगल इन सेम सेगमेंट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, that is 80, so D is also 80. This is our answer. Is it clear, my dear? Now come on the next question. Yes, question number 5. What is question number 5? In a figure 10.39, it given है. Yes. ABCD, a 4 point on the circle. The 4 point है circle पर A, B, C and this is one is D.
AC and BD intersect at E. Both are intersect at E. Such that angle BEC, where is BEC? That one. This is at 130. This is given. ECD, that is 20. We find out the angle BAC. मुझे BAC find करना है. Is it clear, my dear? चलिए बेटे आइए हम फाइंड करते हैं. देखो बेटे ध्यान से, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के वन के इक्वल होता है. Therefore BEC solution equal to angle D, इसका वन नाम देते हैं, D plus 1. Reason is BEC is exterior angle of triangle. Now what is the value of BEC? That is 130. D we find out and 1 is 20. ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा. That is 110. So it is 110. If it is 110, it is also 110 by. Therefore angle A is equal to angle D. अभी previous question में ही मैंने कराया, angle in same segment are equal. So D is 110, so A is also 110. This is our answer. Is it clear, my dear? चलिए आइए. Now again I am saying the sixth question. Come on, the sixth question. Excuse me. Yes, there is sixth question. ABCD is a cyclic quadrilateral. Again, this is a circle and this is a quadrilateral ABCD. Whose diagonal intersect at E? Again, diagonal intersect at E. This one, E. If DBC, that is 70. BAC, where is BAC? BAC, that is 30. We found out the angle BCD. एक तो ये find out करना मुझे, BCD. And next is, उसने कहा if AB equal to AC, sorry, BC, then find the angle ECD. कौन सी इक्वल होगी? अगर AB BC के इक्वल होगी, then we find the ECD. इतना से कितने का होगा? ये होगा. Is it clear? Now solve the question. ठीक है बेटे. Again आप इसे एक मिनट के लिए देखिए. Now this angle equal to this angle. Angle 1 equal to angle 2. Why? Solution. 70. Angle in same segment. सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? थ्योरम की हुई है उन्हें, सेम सेगमेंट्स. सो दिस one is also 70. Now we find out angle A. What is the value of angle A? That is 30 plus 70. That is 100 पूरे. Is it clear? Now we find the एंगल, पूरा एंगल C फाइंड आउट हो जाएगा. कैसे? We know that sum of cyclic quadrilateral, opposite sum of cyclic quadrilateral is 180, in which A is 100, C we find out, प्लस का उधर आके that is in minus, that is 180 minus 100, that is 80. So C is पूरा C कितने का आ गया? 80 का. Is it clear? अब हमें फाइंड आउट करने हैं क्या? एक तो ये BCD और एक ये इतना सा. We know that AB equal to BC, then equal side has equal opposite angle, then angle 3 equal to angle 30. Equal side has equal opposite angle. So 3 name is BCE. BCE. Okay. EC. Is it clear? That is 30. ये 30 का तो फिर बेटे ये कितने का होगा? That one is yes ECD. पूरा 80 में से 30 क्या कर दूं माइनस, दैट इज 50. यही फाइंड आउट करना था. ठीक है बेटे. और BCD हम पहले फाउंड कर चुके थे, ये दैट इज 80. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ
Come on the next question. That is 7th question. That is our 7th question. That is, if diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of a circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is rectangle. If diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of a circle, this is a cyclic quadrilateral, and he says A, B, C, D. डायमीटर जो है ये जो इसके डायगोनल है वो डायमीटर का काम कर रहे हैं. सो दैट इज द सेंटर ओ. नाउ वी प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल. मुझे प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है. इसको ABCD इज रेक्टेंगल. टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल. हाउ टू बी फाइंड इट इज रेक्टेंगल? अगर हम सारे एंगल्स का सम क्या दिखा दें, 90 दिखा दें तो इतना सफिशिएंट है. इज इट क्लियर? चलिए प्रूफ देखते हैं हम. बेटा मुझे पता है AOC इज डायमीटर. इफ इट इज डायमीटर देयरफॉर एंगल D इज आल्सो 90. व्हाई? एंगल इन सेमी सर्कल. अगेन DOB is diameter. If it is diameter, then angle C is also 90. Same reason. Similarly, we can prove angle A or B is also 90. Angle A, B, C and D is equal to 90. और हमने पढ़ा हुआ अगर एक क्वाड्रिलेटर का एक एंगल 90 हो जाए तो वो क्या बन जाता है? That is रेक्टेंगल. ठीक है. All angles are 90. Therefore, ABCD is rectangle. Is it clear, my dear? I hope you understand this question at this session. मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी सारा काम अपनी नोटबुक में कर लीजिए प्लीज, और साथ साथ में करते रहिए क्योंकि आपका बस ये एक एक्सरसाइज और एक चैप्टर रह गया है. इज इट क्लियर माय डियर? चैप्टर रह गया, आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा. इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूँगा, सेशन एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लूँगा. टिल देन थैंक यू वेरी मच माय डियर.